for justice for Tripura student Anjel Chakma continues to grow, a war of versions that has now erupted, whether this was a racially motivated attack or not. Two different claims are now being made by the victim's family and the families of the accused. Now, Chakma's family continues to assert that racial slurs were hurled, and they have strongly refuted the police's denial in this regard, while the police have now shot down the racial angle attack, stating that one of the accused actually hails from the northeastern state of Manipur. Now, the victim's family argue that the accused doesn't originally come from Manipur. They claim that the family is coming from Bihar and later they settled in Manipur. And Angel's family also contends that the racial attack isn't a question of who belongs where. Now, they have been accusing the Uttarakhand police of trying to mislead. On the other hand, families of the accused have denied the racial attack allegations. We spoke to the mothers of the two accused as well, and this is what they say. They say that as far as their son is concerned, they have been unnecessarily dragged into this controversy. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला है। अभी इतना साल हो गया है, मैं उत्तराखंड में रही हूँ, 2010 से हूँ। ऐसे अभी कभी नहीं आया, कभी नहीं हुआ हमारा साथ। ये गलत फंसाया गया है मेरा लड़का को। अच्छा, सूरज है मेरा लड़का का नाम। तो उसने क्या बोला उनको? कुछ भी नहीं बोला, बोल रहा है उसने। मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा में, उसको ऐसे सिमट गया है। अच्छा, मैंने नहीं देखा, बस दारू नीने गया था। पोता का, उसका बच्चा का 1 साल का बर्थडे था। और उसने मना भी किया था, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूँगा ना, दे दे। अब दारू नीने गया है वो, मुझे यही बोला है मेरे बेटा ने, मैं दारू नीने गया मम्मी, मैंने नहीं देखा लड़ाई झगड़ा। रैंडमली स्टार्ट हुई फाइट को एक नक्सलिया वाद देने की कोशिश की जा रही है। जिस क्षेत्र में सूरज जो इसमें एक आरोपी है सूरज, उसकी दुकान है, वो पूरा का पूरा एसटी ट्राइबल एक एरिया है। वहाँ पर एक तुरास इंस्टीट्यूट है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट पढ़ते हैं। फिर वहाँ पर अगर अभी तक नक्सलियत से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही क्यों इन दोनों माइकल और उसके भाई एंजल, जिसके लिए हमें खेद है, जिसकी डेथ के लिए हमें खेद है, हम उसके लिए दुख प्रकट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी भी आप उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप किसी निर्दोष को जेल फांसी पर चढ़ा दोगे। Now, in a mega times now impact amid the war of version, it is now being learned that the Dehradun police will ask the victim's family to formally include allegations of racial slurs in their statement. The SSP Dehradun has now directed the new investigating officer to reach out to the victim's brother, Michael Chakma, who was also a witness, to record a fresh statement via video conferencing. The move comes after the police noted that there was no initial mention of racial slurs, but it was made by Chakma family in their statement to the police from the 9th of December till the 26th. Now, police maintain that while the family shared racism allegations with the media, the same wasn't made as part of the complaint or the FIR. The existing FIR only refers to certain casteist remarks without specifying exact words or the racial language being used. Now, depending upon the updated statement that comes in from the victim's family, additional sections may be invoked by the police. Let's listen in to the victim's brother, who recounts racial slurs being heard at the time of the incident. हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। Well, Kritika, this would be a whole new way that we are looking at the investigation that would be undertaken by the police there, with fresh statements now expected to be recorded. Well, yes, and this fresh statement is coming in after the police has repeatedly denied any charge of racism, and which has now led to a lot of outrage amongst the northeastern community as well, because they are saying that this blanket denial of racism, specifically while the investigation is still on, is unfair to the mode of the investigation. So now fresh statements will be sought from Michael Chakma, because not only is he the eyewitness, but he's also the complainant. So far, the police has maintained that because they have not mentioned any of the slurs being used, the investigation cannot incorporate it. Their statements only exist in the media, which does not have the legal standing. So in order to win their trust as well over the manner of investigation, because remember, the Chakma family has also now demanded for a CBI investigation. This is why
So we're getting you the versions there that are coming in from both sides as far as the accused and the victim in the case is concerned. Remains to be seen how the investigation in this case progresses. Thank you very much, Kritika, for that update. Heading into a short break. You're watching Times Now. Biggest news, biggest